Uh, is this visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me try to. Okay. So in the last class, we had basically, I guess, started with the discussion of coordination of relays. I had basically introduced some important concepts to you. Briefly, the use of plug setting multiplier and time multiplier setting. Then we had looked at basically uh, protection of a overcurrent, sorry, a radial system using a definite time system. Yeah, this is a simple radial system in which all the relays R1, R2, and R3 have been provided with the same plug setting. In other words, they are identical, they are sensitive to the same current, to the same minimum current and higher. But the time of operation is made different by varying the time multiplier setting. Uh, so, yeah, uh, let's look at a simpler example. In fact, how do we protect this? How do we protect a radial system using a definite time relay? Now, can anyone, I think I had introduced this term in the last class. What is a definite time relay? Can anyone tell me? Hello? What is a definite time relay? Sir, relay which will operate at a definite time. What is the definite time? Sir, once the current will exceed a particular value, then only the relay will trip. Oh, sorry, I had muted myself. Is my screen visible? Hello? Yes, sir. Yeah. So let's look at this characteristic. I think we had introduced this in a preliminary manner in the last class. This is time of operation, let's call it T, and this is the current level. In the last class, I had looked at basically the characteristic of a fuse, if you remember. Oh, sorry. This is the characteristic. This is what the characteristic of a fuse looks like, at least for a substantial range of the current. So we have a current value. This is the threshold value, also known as the pickup value. Let's call it I threshold. And then we had seen as the current value increases, the time of operation of the fuse decreases. What is time of operation? It is the time required for the fuse to melt. Okay? In other words, the time needed by the fuse to basically interrupt the current. Um, on the other hand, we have some relays whose characteristics are I mean, they're much simpler than this. So let me use a different colored pen. Characteristic is something like this. So this is a definite time characteristic, and this black curve is a fuse characteristic. Okay. So can anyone tell me, can they spot any kind of a difference between the blue characteristic and the black characteristic? Shabash. सर इंस्टेंटेनियसली होता है सर्किट ओपन ब्लू कैरेक्टरिस्टिक में Instantaneously. What do you mean by instantaneously? as soon as the current as soon Uh, the current exceeds the threshold value within it not instantaneously but बहुत ही कम टाइम के अंदर जो है हमारी करंट इंटरप्ट हो जाती है okay. Okay, I will take that. Any other difference?
it doesn't depend on the magnitude of current. Yeah, precisely. So if you look at the black curve, the time of operation of the fuse is more or less inversely dependent on the current value. As we had seen in the last class, I had given you a brief explanation of this characteristic. But if you look at the blue curve, the time of operation, as soon as you exceed the threshold level, the time of operation is more or less constant. There is a small transition zone. So let me use a different colored pen. There is a small transition zone up to say this current, which is somewhat larger than the threshold level. But beyond this current, the time of operation is more or less constant. Is that clear? Now, can anyone of you give me some physical mechanism by which we can develop a fuse of this characteristic? In fact, in the last class, we had looked at a attracted armature type fuse. How do we make a attracted armature type, sorry, fuse, not fuse, attracted armature type relay? How do we construct an attracted armature type relay whose characteristics are basically given by the blue curve? Shabash, anyone? ओके आपको शायद भूल गया है वो इतनी जल्दी प्लग तो सेटिंग मल्टीप्लायर और उसका ये चेंज करके हम उसको कर सकते हैं ना. बट एक बार आपने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर फिक्स रखा, इट्स नॉट चेंजेबल. ये एक बार आपने सेटिंग की ना, उसके बाद इट्स नॉट चेंजेबल अनलेस एंड अनटिल आप डेलिबरेटली करोगे चेंज. ये नहीं है कि मतलब फॉल्ट आ रही है तो उसी वक्त आप इसको चेंज कर सकते हो. ठीक है. सो वी हैड समथिंग लाइक दिस. वी हैड अ पीस ऑफ आयरन. ठीक है. एंड देयर वाज ए कॉन्टैक्ट लाइक दिस हियर. उसका अपना सपोर्टिंग एक स्ट्रक्चर था. आई विल नॉट शो दैट. ठीक है. Current was flowing through this point, and then current was coming back through this point. Actually, in the structure that I had constructed, I had basically shown a electromagnet which was air cored. But in practice, we don't have air cored electromagnets. In practice, we have an iron cored electromagnet, something like this. There is an iron core here. अब ये थोड़ा साफ नहीं बन गया, but anyway, आयरन कोर क्यों हम बनाते हैं? Anyone? Why do we typically use iron cores in our? इंक्रीज होती है सो कैन फ्लक्स जो है ज्यादा अट्रैक्ट. ये आपको फ्लक्स लेवल बूस्ट करता है, उससे फोर्स वगैरह बूस्ट होता है. यूर रिले इज मोर सेंसिटिव. एयर कोड इसलिए हम यूजली यूज नहीं करते हैं. एनीवे अब तो इनमें से कोई भी यूज नहीं होता है. बट एनीवे फिजिकली आपको मैं समझाना चाहता हूँ. नाउ आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ समथिंग नोन एज सैचुरेशन ऑफ आयरन. व्हाट इज सैचुरेशन? when there are no more domains to be aligned. हाँ, सैचुरेशन में ये होता है. So if you look at this piece of iron, this is current I, and it's producing, let me use, it's producing a flux like this. ठीक है. अभी उतना साफ नहीं बन गया. एक्चुअली स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं है. ये आयरन पीस हम इसके बीच में रखते हैं. बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद दिस सिंप्लीफाइड एग्जांपल. दिस इज द करंट दैट इज फ्लोइंग एंड दिस इज द फ्लक्स दैट इज प्रोड्यूस्ड. इनके बीच में कैसा होगा? कैन इट बी लाइक दिस? सॉरी, आगे जाके सैचुरेट होगा सर. it will behave like this. What does this mean? So for example, if the current has this value, or if the current is increased to this value, what happens to the flux level? Constant. Flux level is more or less constant. If the flux level is constant, for any current beyond this point, let's assume ये वाला, hopefully आपको पता है, it's known as a knee point. But anyway, let's call this I1. For any current greater than I1, the level of flux is more or less constant regardless of the current value that is flowing through this coil. If flux is constant, the force on this iron piece is constant. If the force is constant,
the time required for this contact to close and for the tripping to happen is more or less constant. Is that clear? Is that clear or not? इन अदर वर्ड्स, ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, पुराने जमाने में हम ये कैसे बनाते थे, ये ब्लू वाला कैरेक्टरिस्टिक, वी यूज्ड ए रिले विच वाज हाईली ससेप्टेबल टू सैचुरेशन. कैसे बना सकते हैं कोई रिले जिसमें जल्दी सैचुरेशन हो जाएगी? शाबाश. उसका साइज, कोर साइज बहुत छोटा अगर होगा, कम डोमेन्स होंगे उसके अंदर. या एग्जैक्टली. फॉर अ गिवन करंट एंड ऑल दैट, जितना आपके पास फ्लक्स पाथ ज्यादा है या उतना जितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, उतना उसमें प्रोबेबिलिटी हायर है कि वो सैचुरेट हो जाए. Because to produce a given value of flux, you require a greater value of flux density in such a structure. Anyway, now as you can see, look at the beauty of this network. More or less, as long as this current is exceeded, whatever be the value of this current, the time of operation is fixed. Is that clear? ठीक है. So एक किस्म से इसमें simplicity है. Simplicity का मतलब यह है कि look at this curve, it is rather complicated. In order to find out the time of operation of the relay, one must have a precise information about the current that is flowing. But such a kind of precision is not required in the blue curve. As long as you know that the current is somewhat greater than this threshold level, the relay time of operation of the relay is fixed. Again, fixed का मतलब है it is something that can be manipulated. ये जो current level है ना, इसको up या down आप कर सकते हो. कैसे करते हैं? लास्ट क्लास में हमने देखा था. Physically, how can you change the time of operation of this relay? हेलो. टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग वगैरह चेंज हाँ, करके. टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग क्या होता है? मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन को हम कम या ज्यादा करते हैं, जो आयरन है ना. इज दिस क्लियर? ठीक है. इन द सेम वे, ये जो हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल है, दिस कैन आल्सो बी मैनिपुलेटेड. इट कैन बी पुश्ड लेफ्ट और राइट. हाउ डू वी डू दैट? थ्रेशोल्ड लेवल को हम प्लग सेटिंग भी कहते हैं, जैसे लास्ट क्लास में प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर. वो कैसे हम वैरी करते हैं? बेसिकली बाय टेकिंग, instead of taking a system like this, we take a plugged system. इसमें variable number of turns हैं, ठीक है, and this is a plug. ठीक है. Greater is the plug level, greater will be the ampere turns, greater will be the flux, and therefore to produce a given flux, smaller current is required. उसका मतलब ये है कि you can have a, आप इसको number of turns increase करोगे, smaller threshold level होगा. Number of turns increase करोगे, greater threshold, sorry, decrease करोगे, greater threshold level होगा. So you have there are two ways to control this characteristic. ये जो blue curve है, you can shift it to the right or to the left. Obviously not without limit. There are some limits obviously on it. And this blue curve can be shifted to the top, or it can be pushed to the bottom. Obviously there are some limits to it. Is that clear? ठीक है. So let us see how this very simple curve, which again I will repeat the term, this curve is very simple. There is, इसमें कितने मतलब चीजें आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. You basically require only two data points about this curve. Data point क्या है? What is the threshold level and what is the time of operation? So you need what is the distance from this point to this point, and what is the distance from this point to this point. Bus, no other information is required. Compare that to this characteristic of जो आपके पास फ्यूज कर्व है, where an infinite number of data points in theory are required. In practice, we will see that there are some experimentally derived formulae which we can use, but at the very least, there is no formula, there is no function. You don't have to perform any complicated mathematical calculation. If I give you the threshold value or the plug setting, and I tell you the time of operation, automatically you will be able to find out. Oh, I'm so sorry. There is some message. Okay. Time of operation, you can totally capture the characteristic of the DT relay. So let's move on. Let us see how this DT relay is used for the protection of a radial system. ठीक है. We have a radial system. There is a single source of supply. ठीक है. Typically जो हमारे distribution या sub transmission network होते हैं up to say 33 kV, they are typically radial in nature.
The moment you go at a voltage level greater than 33 kV, the moment you reach into the transmission grid, systems are not radial, they are meshed. ठीक है, multiple sources of supply होते हैं, multiple lines होती है जहाँ से power flow हो सकता है. um, mm, so just to give this a concrete flavor, you can assume that this is a feeder which is supplying your area. This load represents one colony or one lane. This load is basically the transformer or whatever of some other colony, and so on and so forth. ठीक है. Anyway, what do we have to do here? Now, what is our objective? Let me write down. Objective is every line section, ठीक है, has to be protected, and every line section must have a backup. In the last class, I had basically briefly introduced this concept of backup relaying. It is required because no device is foolproof. If there is any problem with this relay R1, and let's assume there is a fault here, then relay R2 must basically rise to the occasion and isolate this line section. We had seen that if this relay R2 operates and trips its circuit breaker, in addition to this small line section, a larger line section is also isolated. And therefore, we are obviously compromising with selectivity. ठीक है, अगर आपको याद होगा, ideal characteristics of a relay should be selective. It should isolate the smallest possible part of the power system in order to isolate the location of the fault. That condition is not satisfied if the fault is somewhere here and either relay 2 or a relay R3 operates. But anyway, backup is something that is required. How do we basically incorporate backup in our system? Basically हम क्या कर रहे हैं? Now एक question है आपके लिए. Let's assume there is a fault here. Let's call this fault F1. And let's assume there is another fault here. ये simultaneously ये मतलब कोई और fault है, ठीक है? F1 यहाँ पर नहीं है. Let's call it F3. Fault current कहाँ होगा ज्यादा? Here कि दोनों जगह same होगा? Anyone? F3 ज्यादा होगा. Why? जनरेटर के नजदीक है. Yeah, it's closer to the supply. Is that clear? In other words, because in this particular system, relay 1 has a backup provided by R2, and in fact, it's not only backed up by R2 in this particular case. Sorry, it is backed up by R2. यहाँ पर आप देखो, how do we first of all define backup? How do we define primary and all that? यहाँ से लेकर यहाँ तक, let's call this point A, and this is bus B. This line section AB is a responsibility of relay R1, and we say that the reach of the relay extends from point A to point B. Is that clear? Reach क्या होता है? It is the zone, it is the area, it is the portion of the power system whose protection responsibility is assigned to a certain relay. In this case, the protection responsibility of relay R1 extends to this line section AB. Okay, let's call this C, let's call it T. Now, every relay must have some kind of a backup present in it. वो हम कैसे करते हैं? Look at this relay R2. Relay R2's responsibility extends from point C to point B. Is that clear? Not just from point C to point A. Similarly, look at relay R3. Its reach or zone of responsibility extends from point D to point A. In other words, ये जो R3 है, it is acting as a backup relay for R2. Now, look at the time of operation of the relays. In all cases, in fact, we will solve a numerical on this problem. ये जो हमारे पास पिकअप है रिलेज का, पिकअप क्या होता है? लेट अस गो बैक टू दिस करंट हियर, प्लग सेटिंग पिकअप, जो भी आप इसको कहना चाहते हो, थ्रेशोल्ड लेवल. इट इज द सेम फॉर ऑल द रिलेज. नाउ कोई मुझे कह सकता है कि इसका हाउ डू वी सेट द पिकअप वैल्यू हियर? एनीवन?
फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट दिस फॉल्ट F3, ठीक है, हमने देखा इसका करंट लेवल सबसे ज्यादा होगा. If I keep the pickup value of all the relays corresponding to this current F3, will I have a successful protection scheme? Anyone? नो सर, Why? बिकॉज R1 भी ट्रिप हो जाएगा उससे. R1 कैसे ट्रिप होगा? नहीं सर, सॉरी, R1 ट्रिप नहीं होगा उससे अगर फॉल्ट F1 कम भी होगा. अब यहाँ देखो F3 is this current is very large compared to any other current to the right of it. अगर मैंने सारे रिलेज का रखा ना थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम करंट वैल्यू जिस पे ट्रिप होगा corresponding to this fault F3, if there is a fault say somewhere here F1, then relay R1 will never trip. Same is true for relay R2. This will never trip if there is a fault here. So if I keep a fault current which is unnecessarily large here, threshold level rather, मेरे को ये selectivity again lose हो जाती है. So what will I do? In fact, I will solve a numerical here. Okay, ठीक है. Let's draw a very simple system. In fact, I will draw a very even simpler system. I will just start with two buses. The logic is something that we can extend to any arbitrary number of buses. Okay, we have this bus, we have another bus, we have a third bus. Okay, let's call this bus A. This is bus B, and this is bus C. Okay. Okay, and then this is the load connected to bus A. ILA, L for load. Then we have a load connected to bus B. Let's call it ILB. If you will notice, in many applications, the load information is provided in terms of real and reactive power. But here we have to first of all convert that into current information because we are studying over current relaying. Okay, this is ILC. Okay, and then let me use a different colored pen. There is a line connecting bus A to B, line connecting bus B to C. Okay. Okay. Okay, so there is a circuit breaker here, there is a circuit breaker here, there is a current transformer here, there is a current transformer here. ठीक है, this current transformer is. सर एक दो का डिस्कनेक्ट हो गया था, उनको प्लीज अलो कीजिए. Okay, एक second. There is no one here. आप कह रहे हो ना डिस्कनेक्ट हो गया, but I am not seeing anyone who's trying to enter or anything. Okay, जब वो आ जाएंगे so please let me know. ठीक है. So we have a system like this. This is okay, कोई अब आ रहा है. This is CTA. This is CTB. ठीक है. So we have this is the relay A. This is a definite time over current relay. This is definite time over current relay B. ठीक है. These are circuit breakers. This is another circuit breaker, and this relay controls this circuit breaker. The same is true for relay B and its relationship with the other circuit breaker. Okay. So this problem is something that I have taken from your textbook, which is the Pathankar and Bide. Wait a second, कोई और join कर रहा है. ठीक है. Actually, things are a bit more complicated. In practice, we don't have a single phase system. We have a three-phase system. We shall, inshallah, see today itself
how is the system modified in the case of a three-phase system? We have exactly the same configuration. The only difference is we have to make special arrangements for ground faults. You can imagine that this is an arrangement for phase faults. Anyway, वो क्यों है reason, we'll see that. Now, look here. ऐसे रखूंगा. This is the ये एक exaggerated मैं बना रहा हूँ, but something like this. What I'm doing is this is a plot of the fault current that would flow into the fault as a function of position. Now, as you can see, at this point, the fault current is the largest because it is closest to the source. As we move away from the source, the fault current falls. So here we would expect a fault current of I of B. And as one moves away from the source, the fault current becomes even smaller. In practice, the variation of the fault current with respect to position किस पे depend करेगा? कोई कह सकता है? Anyone? कब ज्यादा होगा, कब कम होगा? That is my question. अरे कोई तो बोलो यार. सर क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन है, मैं समझ नहीं पा रहा. क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, IFA हमको IFB से बड़ा है, ठीक है? Did you get that? यस सर. This fault current is greater than this fault current because this is closer to the generator. ठीक है? What factors decide the difference between this current and this current? वही क्वेश्चन है मेरा. इनके कितना बीच में दूर होगा डिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन कितनी लंबी होगी, ओके, एंड और बीच में कितने ये फीडर्स होंगे, उस पर क्यों डिपेंड करेगा? Fault current is much greater than load current. So normally when we perform a fault current calculation, we typically ignore the load current. Anyway, आगे. सर और कोई फैक्टर नहीं लग रहा है, वैसे जनरेटर से कितना दूर होगा वो पॉइंट? ओके, आपके लिए क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल ये जो जेनसेट है, केस नंबर 1, genset is connected directly to this bus, which is an unlikely scenario, but let's assume. Case number 2, ये जो actual generator है ना, it is connected at a very large distance from bus A. ठीक है? केस नंबर A में, केस नंबर 1 में, क्योंकि A बस है मेरी, जनरेटर मैंने बस A पे कनेक्ट किया, और केस नंबर 2 में मैंने जनरेटर एट अ वेरी लार्ज लोकेशन, दूर कनेक्ट किया, मे बी 100 किलोमीटर्स, बीच में कोई ट्रांसमिशन लाइन है. ठीक है? इन केस नंबर 1 में मेरे को ज्यादा वेरिएशन होगी ऑफ फॉल्ट करंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑन दिस फीडर, या केस नंबर 2 में? सेम होगी. व्हाई? उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहेगी ना ट्रांसमिशन लाइन की. आप कह रहे हो कि फॉल्ट करंट सेम होगी? इन व्हाट केस? सर मतलब अगर जनरेटर आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया है या दूर से कनेक्ट किया हुआ है. ओके, दूर कनेक्ट किया हुआ है, उसमें क्या होगा? सर ट्रांसमिशन लाइन से ही कनेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइन की जो रेजिस्टेंस होती है दैट्स वेरी नेग्लिजिबल. तो उसकी रिएक्टेंस नेग्लिजिबल मत है. We'll come back to this question. ठीक है? This is an important question, इससे मैंने पहले आपको बता दिया है. Okay. Now the question is, this relay B is tasked with the responsibility of protecting this line section BC. This relay A is tasked with the responsibility of protecting line section AB. It also acts as a backup for line section BC. ठीक है? मेरा 2-3 क्वेश्चंस हैं. नंबर 1, अगर आपको याद होगा, ये वाला है. हर एक जो हमारे पास DTOC रिले होता है, डिस्क्रीट टाइम ओवर करंट रिले, we have it's completely characterized by 2 parameters. This is the pickup current, so let's call this IP, and this is the time of operation, so let's call this TOC. Once you specify the pickup current and the time of operation or operating time, whatever जो आप कहना चाहते हो, of the DTOC, it is fully characterized.
मैं इस वाले सिस्टम में रिले बी, रिले ए, अगर और भी बसेस होते रिले सी एंड ऑल दैट, उनके पिकअप करंट्स कैसे सेट करूंगा, एंड उनके व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, टाइम ऑफ ऑपरेशन कैसे सेट करूंगा? कोई कह सकता है? हाउ वुड आई प्रोसीड फ्रॉम दिस? लेट्स स्टार्ट विद से पिकअप वैल्यू. एनीवन? अरे कोई तो बोलो यार. ओके, मैं इसको सिंपलर प्रॉब्लम बना लेता हूँ. लेट्स लुक एट दिस रिले बी. शुड इट ट्रिप फॉर व्हेन द, अगर यहाँ आप देखो, under normal conditions, let me use a different colored pen. The current that is flowing here is ILC. ठीक है, मैंने क्या यहाँ यूज किया? आई हैव सिंपली यूज KCL. एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो हो रही है इस लाइन फीडर में, सेक्शन में? व्हाट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग B हियर? plus ILC. इट इज IL. ILB plus ILC. हाँ. Now, obviously, in general, there is a phase difference between these two currents at any instant of time. But we always design our systems for the worst case scenario. The worst case scenario for this would be when these two are in phase. उसमें यहाँ पर largest current है and वहाँ पर selectivity मुश्किल हो जाती है. Why? Because remember, an overcurrent relay distinguishes between normal operation and abnormal operation by using what? By looking at the level of the current. जितनी आपकी normal current high होगी, है ना, ऑन द हायर साइड होगी, उतना आपको, आपके रिले को मुश्किल हो जाएगी डिस्टिंग्विश करना बिटवीन नॉर्मल करंट एंड फॉल्ट करंट. So typically when we perform such analysis, we neglect any phase difference between these currents. We assume that they are in phase. Remember, everything is AC here. ठीक है? Okay, let's look at this relay B. When current is ILC, should this relay trip? That is the question. No, sir. Okay, फिर कहाँ पर ट्रिप होना चाहिए? जब फॉल्ट होगा उस बस पे. किस बस पे? फॉल्ट करंट तो यहाँ कांस्टेंट मत है. एज यू कैन सी, द फॉल्ट करंट वेरीज फ्रॉम B to C. दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C. Remember, this is a IFB DTOC पे. relay. You have to define a pickup. एक ही करंट डिफाइन करनी है. IFB पे होना चाहिए ट्रिप. IFB पे होना चाहिए ट्रिप. ओके, व्हाई? बिकॉज वही स्टार्टिंग मतलब जो अगर हम देखेंगे मैक्सिमम करंट इस BC फेज में, BC लाइन में IFB ही है. ओके ओके, यहाँ पर आप देखो, पिकअप वैल्यू का डेफिनेशन क्या था? इट इज द स्मॉलेस्ट करंट फॉर विच द रिले ऑपरेट्स. इज दैट क्लियर? लुक एट दिस कैरेक्टरिस्टिक, blue characteristic. For any current smaller than the pickup current, will the relay operate? नो सर. So let's go back to this line section. If I take a pickup current of IFB, जो आपने कहा, will this system operate when the fault is on this bus C? वहां पर fault current कितना है? IFC. क्या ये ऑपरेट होगा? नो सर, IFC पे होना चाहिए पिकअप वैल्यू. इन अदर वर्ड्स, जो मेरा पिकअप करंट है, इट शुड satisfy this is the pickup current. At the moment I am talking about the current on the yeah, क्या शुभना, on the what is the word for it, on the primary side. ठीक है? Remember, the actual current that is seen by the relay is not this current. It is current divided by the CT ratio. Anyway, this is current. Let's write it like this. On the primary side, it should lie in this zone. ठीक है? It should be greater than ILC, and it should be less than IFC. यही है? Do you agree with this? मैंने क्या बोला? जो मेरा पिकअप करंट है रिले का, ILC से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज ILC इज नॉर्मल करंट. बट IFC, जो आपके पास यहाँ पर फॉल्ट करंट है, उससे कम होना चाहिए. ठीक है? या उसके बराबर होना चाहिए, बट कम से कम उसके उसके उससे ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है? इज दैट क्लियर?
Is this clear or not? Yes, sir. Hello? Now, what about time of operation of this relay? कैसे डिजाइन करूंगा टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस रिले? हमने देखा था फॉर अ टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ 0.1 वी हैव स्मॉलेस्ट टाइम, 0 फॉर 1 यानी कि 100% वी हैव लार्जेस्ट टाइम ऑफ ऑपरेशन. अगर मुझे यहाँ पर रिले का टाइम ऑफ ऑपरेशन चूज करना है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? आई एम स्पेंडिंग सम टाइम हियर बिकॉज मैं चाहता हूँ आप समझो ये कहाँ से, आसमान से नहीं आ रहा है, हर चीज का लॉजिक होता है. एनीवे, सो हाउ वुड आई design or choose the time of operation? टाइम ऑफ ऑपरेशन रिले का क्या होना चाहिए, ज्यादा कम? उससे हम स्टार्ट करते हैं. Anyone? ज्यादा भी सर कम होना चाहिए, बट इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि किसी ट्रांजिएंट करंट के लिए भी ट्रिप हो जाए. ओके ओके. सो इसलिए जो हमारे पास, अगर आपने लास्ट क्लास आपको याद होगा, टीएमएस हम 0.1 से कम नहीं रखते हैं. 0.1 से कम नहीं रखने का वही मतलब होता है कि ये ट्रांजिएंट वगैरह को इग्नोर करें. बट लेट्स सी, नाउ लुक हियर, दिस रिले हियर आर बी, it is the इसको हम कह सकते हैं downstream relay. You can imagine that instead of power flowing from point A to point C, imagine that water flows from point B to point C. It's a kind of a river. So this is downstream, this is upstream. Look at the downstream relay. It is only responsible for line section BC because the feeder terminates at C. There is no other, यहाँ पर इसके आगे कोई और line section नहीं है. Because it is only responsible for line section BC, we should try to keep its time of operation as small as possible. Why should we, what is the logic for keeping the time of operation large? Okay, it is not responsible for any other line section. So what we will do is, let's go back here. This is time of operation of B. We will keep it as small as possible. So अब इसमें एक्चुअली टाइम ऑफ ऑपरेशन बहुत वैरी होता है. लेट्स टेक अ नोशनल वैल्यू. उसका मतलब नहीं है कि ये कोई स्मॉलेस्ट टाइम है कि ये लार्जेस्ट टाइम है. Let's take a notional value. Let's keep it at 0.1 seconds. Is that clear? So what we have done is we have given a range of currents uh, uh, which can be used for setting the plug setting of the relay. We have also defined the time of operation of the relay. Okay, operating time of the relay. Now the question is between ILC and IFC. ठीक है, कौन सी करंट आप चूज करोगे? लेट मी मेक इट कॉन्क्रीट. लेट्स अज्यूम ILC से 50 एम्पियर. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी यूज अनदर पेन. दिस इज टिपिकल. एंड लेट्स अज्यूम IFC is say 500 एम्पियर. Remember, the fault current is substantially large compared to the normal current in a typical system, but it may be not as wide as 1:10, but anyway, it is quite large. So क्या रखोगे आप IP का वैल्यू? Will you keep IP equal to 490 ampere, for example? Does that make sense? Hello? Am I audible? Faza? Yes, yes sir, yes sir. मेरे पास है नॉर्मल करंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 एम्पियर के आसपास होगी. फॉल्ट करंट एक्चुअली, चलो 500 तो बहुत बड़ा फिगर है. लेट्स अज्यूम ये 200 एम्पियर है. ठीक है, मैं क्या रखूंगा अपना पिकअप वैल्यू, मतलब क्या रखना चाहूंगा? 100 के आसपास में भी. क्या रखूंगा? Around 100, 150. वाई? बिकॉज ओवरलोड पे ट्रिप भी नहीं होना चाहिए एंड फॉल्ट से पहले ट्रिप हो जाए. So let's assume I will keep it at 100. Normal current is 50 एम्पियर. ठीक है, यस सर. इज दैट क्लियर? अगर 100 एम्पियर तक ये ट्रिप नहीं होगा, मैक्सिमम ओवरलोड कितना है इसमें इन परसेंट? 100%. सो कोई इक्विपमेंट है जो 100% ओवरलोड कर सकता है, मतलब बेयर?
नो सर, 20% तक होते हैं। हाँ, तो उसका मतलब ये है टिपिकली, ये जो हम अगर ऐसी रेंज है ना हमारे पास, दिस इज नॉर्मल करंट एंड लेट्स अज्यूम दिस इज फॉल्ट करंट। ये जो नॉर्मल करंट है, हम आईपी को क्या रखेंगे, इट इज इक्वल टू दिस नॉर्मल करंट, लेट्स कॉल इट एनसी, plus some overload range. Let's assume it is say 20% or 25%, something like that. Now, should it be 20%? Should it be 21%? Should it be 25%? Will it be 30%? Those are questions for which we can't give a theoretical answer. That basically depends on the specific application. कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस फीडर इज समथिंग विच इज कनेक्टेड टू ए, मतलब इंस्टेड ऑफ इमेजिन कि ये कोई डोमेस्टिक फीडर या कोई मतलब शहर का फीडर है, दिस इज अ फीडर ऑफ अ फैक्ट्री और समथिंग। सो दिस लोड में बी कनेक्टेड टू अ वर्कशॉप, ठीक है, जहां पर लेथ वगैरह आपने शायद अगर वर्कशॉप देखा होगा वहां पर होती है, कोई है। दिस इज कनेक्टेड टू सम फैक्ट्री में और क्या होता है, मतलब यहाँ पर कोई जेनरेटर रूम है उसको कनेक्टेड है ये एंड ऑल दैट। नाउ द थिंग इज, जहां पर भी आपके पास कोई वर्कशॉप होगा, जहां पर कोई कटिंग मशीन है, यहाँ पर कोई मिलिंग मशीन है, इट हैज अ मोटर। मोटर जब आप कनेक्ट करते हो उसमें ओवरलोड करंट फ्लो होती है। ओवरलोड करंट इज क्वाइट सब्सटेंशियली लार्जर कंपेयर टू नॉर्मल करंट। सो मोमेंटरली दिस करंट कैन बी वेरी लार्ज कंपेयर टू, मतलब जो नॉर्मल लोड करंट है ना, एवरेज लोड करंट जिसको आप कह सकते हो, टिपिकल लोड करंट जो आप कह सकते हो, मैक्सिमम लोड करंट जो भी आप कहना चाहोगे, टिपिकल वैल्यू लोड करंट, उसके बनस्बत आपकी मोमेंट्री करंट बहुत हाई हो सकती है। सेकेंड थिंग है, आपने इसको टाइम ऑफ ऑपरेशन बहुत कम रखा। उसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे मोटर्स हैं, उसको आपने कनेक्ट किया, तो मोटर के स्टार्ट होने की वजह से भी आपका रिले ट्रिप हो सकता है। अंडर दो सर्कमस्टेंसेज, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एट से 20%, यू विल ट्राई टू कीप इट एट अ हायर साइड, से 40%, ठीक है। और यू विल, अनदर वे ऑफ डीलिंग विद दैट इज, यू विल ट्राई टू इंक्रीज दिस टाइम ऑफ रिले। बट देर आर सम प्रॉब्लम्स विद डूइंग दैट। ये कोई हर एक चीज के लिए पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है, एज वी विल सी। तो moral of the story is, what is the extent of this margin of overload that you will keep in your pickup value? It is something that you can only answer by experience. If nothing is given in these typical problems that you have to solve in your books, if no information is given beforehand, you take a value, say 25%. Is that clear? That is typical. So anyway, we have more or less this formula gives us the time of operation of the relay. This formula gives us the time, the pickup value of the relay. But कौन सा relay? Relay B, ठीक है। Now we are still left with relay A. How will I design relay A? शाबाश। अगेन डिजाइन का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट इसका पिकअप वैल्यू क्या होगा। उसके बाद वी विल लुक एट व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। एनीवन? सर उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए रिले 20 से ज्यादा और पिकअप सेटिंग 20 से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यू हैव टू क्वांटिफाई दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन सेम लॉजिक, हमने कहा रिले बी जो आपका है, it should not trip for normal load current. Should relay A trip for normal load current? नो सर। नहीं। इसका normal load current क्या है? ILB plus ILC। So the first step here would be the pickup value of relay A, it should be greater than ILB plus क्या है ये? ILC. Is that clear? I'm so sorry. ILB plus ILC, ठीक है। What about maximum value? यहाँ पर हमने क्या बोला? why did I choose a value of IFC here? Anyone? अभी हमने देखा था, फैजान को मैंने बोला था, उसने बोला पहले IFB, फिर मैंने उसको लॉजिक समझाया कि नहीं IFC होना चाहिए था। क्यों किया था चूज मैंने IFC इन द केस ऑफ रिले बी? सर मिनिमम वैल्यू है ना वहां पर जो फॉल्ट देख रहा है। हाँ, इफ आई कीप अ पिकअप वैल्यू ग्रेटर देन IFC,
I will be blind to a fault on bus C, है ना? Now let's look here. Look at this relay A. इसका अपर लिमिट क्या होगा पिकअप करंट का? क्या होना चाहिए? Will it be IFA? Will it be IFB? Will it be IFC or something in between? IFB. Okay, let's assume it's IFB. ये किसने बोला था? Was it जासरा? जी सर. Okay. जासरा आपने क्यों बोला IFB? सर क्योंकि अगर यहाँ पे फॉल्ट है बी के पास तो ए सेंस करेगा, अगर सी के पास फॉल्ट है वो बी वाला रिले सेंस कर सकता है उस टाइम. ओके ओके. सो उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ फॉल्ट हियर, ठीक है? दिस रिले जो है आर बी, ऑब्वियसली यहाँ पर का मतलब है दिस इज द फॉल्ट करंट, ये वाली ना, ये वाली फॉल्ट करंट है, क्योंकि जो हमारा रिले है आर बी, इसका पिकअप वैल्यू लोड करंट से ज्यादा है बट आईएफसी से कम है, and this fault current is obviously greater than IFC. This relay B will be sensitive to this fault. What about this relay? If I take a fault, इसका upper limit मैंने ले लिया IFB. So let's assume I have kept, मैंने इसको बोला देखो तुम IFB तक जाओ. That is your designation, जो भी आप कहना चाहते हो. हेलो? यस सर. क्वेश्चन है क्या रिले ए ऑपरेट होगा? नो सर. Why? इसकी जुरिडिक्शन में आएगा ही नहीं है अगर हमने फॉल्ट करंट IFB रखी. अगर मैंने पिकअप वैल्यू रखा IFB of relay A, it will only be sensitive to faults between A and B, because you look here, between A and B, the fault current is either equal to IFB when fault is at B, or it is greater than IFB. If I take the pickup value of relay A to be exactly equal to IFB, then it is completely blind to anything that happens on line section BC. But is that desirable or undesirable? Undesirable. Why? Backup relaying. Yes, exactly. अगर खाली हमको होता ना कि ये साइलोज में ऑपरेट करता, ये जो आपका रिले है A, it was only responsible for operation for any fault between A and B, then okay, I would say ये है IFB आपका upper limit and all that. But that is not the case. It is not only responsible for AB, it is also in a responsible for anything that happens in BC, because it is providing backup to BC. Again, why is backup necessary? It may be the case कि यहाँ कोई fault आ गया, for example कोई चूहा है उसने सीटी खा गया है, something. I'm obviously giving a humorous example, but ऐसे cases होते हैं. यहाँ पर इसको corrosion हो गया, ठीक है, water seeped into the cable, उससे short हो गया, this relay got jammed, या इसका क्योंकि relay nowadays अब तो गया ये armature का time, we now have relays which are basically computers, they are microprocessors. Now the thing that you would have seen that every computer requires some kind of a reliable power source. Even if the power is disconnected for a millisecond, the computer shuts down. इसलिए जो आपके desktops वगैरह होते हैं वहाँ UPS क्यों use करते हैं? So there can be some fault with the power supply of this relay. If there is a fault here, then obviously this relay is not operational. In such a case, you are not, I mean, it's not as if you can leave anything to chance. आपका जो system है, it should still, your protective system should still protect your power system. So moral of the story is, this relay A must be sensitive to anything that happens in line section BC, along with obviously its own line section AB. But as you can see, the easiest kind of fault on line section BC, or the most least serious kind of fault on line section BC, corresponds to a fault here, because the fault current here is lowest, IFC. So इसमें range भी यही IFC, ठीक है? So in this case, I will repeat, in the case of relay B, we had this जो upper limit था हमारे पास IFC. The reason was it must be sensitive to the least severe fault in its zone of operation.
In the same way, because this relay A is also operating as a backup for the next line section, it must be sensitive to the least severe fault in the next line section. Is this clear? Any Sir, questions? how many backups does a line section require? बस एक बैकअप. ये जो आपका है ना, ये मैंने शायद वो डायग्राम दिखाई थी ना, कहाँ गया ये है ना, फॉर एग्जांपल ये लाइन सेक्शन है ए बी, इसका अपना प्राइमरी प्रोटेक्शन R1 है और बैकअप दे रहा है R2. लुक एट द रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. एंड इन द सेम वे लाइन सेक्शन CA प्राइमरी है R2, लेकिन बैकअप प्रोवाइड कौन कर रहा है? R3. लुक एट द रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है. वी शैल अब अगेन लाइन सेक्शन एंड लाइन सेक्शन में फर्क होता है. एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग ऑफ दिस सिंपल ओवर करंट रिलेज. We will maybe after minor one look at some other kinds of relays where obviously you can have more than one backup. Okay, so I'm not making a final statement, but at least for overcurrent relays we have only one backup. Is this clear? Hello, Yes, is this clear? Yes, sir. Okay. Okay, so this is about current. What about time of operation? that should be more than previous one. हाँ, so time of operation should be greater than sorry, this is A मुझे लगता है. It should be greater than B. Why? Because primary relaying को कम से कम मौका मिले काम करने का. हाँ. So again, let me I mean quantify this. Let's assume this is also 50 ampere. So if this is also 50 ampere, this will be 50 plus 50, that is 100 ampere. ठीक है. So ये जो आपका line section IPA है, इसका जो पिकअप वैल्यू है, it should be greater than 100 ampere. And what about this fault? It was शायद 200 ampere था ना? Is this clear? कितना मैं लूंगा मतलब typically if normal current is 100 ampere, मतलब if nothing 120 else is given, 120, 130, 115, some exact value is something that you can only tell by some practical experience with that particular system. ठीक है. That will again depend, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लोड किस टाइप का यहाँ पर कनेक्टेड है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब मैक्सिमम करंट एंड नॉर्मल लोड करंट में क्या रिलेशनशिप है, सो एंड सो फोर्थ, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो होती है. सो एनीवे TA शुड बी ग्रेटर देन TB. Why? Because if I keep TA to be exactly equal to TB, because any fault current here, this relay is sensitive to this fault current, and this relay is also sensitive to the same fault current. What will happen? Both relays will tend to operate. If the time of operation is exactly the same, both relays will operate, both circuit breakers will trip. So if there is a fault current here, ये circuit breaker तो trip हुआ ही हुआ, this circuit breaker also trips. If this circuit breaker trips, this load is also disconnected. अगर खाली ये circuit breaker trip होता, only this load was disconnected. So you have double the line outage, or at least power outage. Is that clear? That is obviously undesirable. So this time of operation should be greater than this time of operation. Now the question is, कितना greater? किस पे depend करेगा? Anyone? Anyone? So to make things concrete, TB was 0.1 second. ठीक है. So TA and TB में कितना फर्क मैं रखूंगा? Whatever. Should it be 0.5 seconds? Should it be 0.01 seconds? Should it be, I don't know, मतलब some other time? किस पे डिपेंड करेगा ये? हेलो, Yes, sir. किस पे डिपेंड करेगा? ओके, Idea नहीं लॉजिकली मैं देखता हूँ आपको. देखो, मेरा एम क्या है? मेरा एम ये है, इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन लाइन सेक्शन BC, only this relay should trip under normal conditions. This relay should also try to trip, but its tripping mechanism should not be successful. In other words, जो इसका time of operation है, इतना ज्यादा होना चाहिए कि under no circumstance, under normal conditions, will this relay trip if this relay is also actuated.
Now let us see what happens. If there is a fault in this line section, ये जो आपका रिले है ना, रिले ऑपरेटिंग टाइम कितना हमने रखा, इट इज 0.1 सेकेंड. रिले ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, कहाँ गया वो? रिले ऑपरेटिंग टाइम ये है कि यहां से करंट फ्लो हो रही है, ये जो आयरन है इसको कितना टाइम लग गया इस कॉन्टैक्ट को क्लोज करने में. बट रिमेंबर, लेट मी कंप्लीट द डायग्राम. If this contact is closed, this contact is closed in a time period equal to 0.1 second, जैसे हमने देखा. But at 0.1 second, is the circuit breaker opened at exactly 0.1 seconds? Hello? नो सर, Why? उसी टाइम कहाँ ओपन हो जाएगा? देखो क्या है, मतलब हमने 0.1 सेकेंड पे ये स्विच किया क्लोज. ये जो बैटरी है ये आपके इस मतलब सर्किट ब्रेकर की एक्चुअली कॉइल एक होती है, बट एनीवे सर्किट ब्रेकर का एक कंट्रोल इक्विपमेंट है उसके साथ कनेक्टेड है. नाउ दिस करंट कांट जंप इंस्टेंटेनियसली, इसको टाइम लगता है करंट यहाँ ना फ्लो कराने में, कुछ डिले हो गया. आफ्टर दैट this tripping signal to travel from this to the circuit breaker, there is some delay. ठीक है, उनके बीच में कोई तार वगैरह होती है, उसमें करंट बिल्डअप होने में टाइम लगता है. And finally, the circuit breaker will not trip instantaneously. Remember, circuit breaker is a mechanical device. जैसे घर में आपने देखा होगा, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो मतलब मिली सेकेंड में खुलेगी. There is a current that was flowing. This is the circuit breaker. ठीक है, इसको फिजिकली इस कॉन्टैक्ट और इस कॉन्टैक्ट को एक दूसरे से सेपरेट करना होता है. फिजिकली का मतलब है these contacts were initially in a touch and they started to move away from each other. दैट विल टेक सम टाइम, क्योंकि आपको मैकेनिकल मोशन दिखाना है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं है. आयरन या जो भी मटेरियल आपके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स का, उनको हिलने में टाइम लगता है. एंड इवन अदरवाइज, even let's assume you have separated the contacts, will the current fall instantaneously to zero? Answer obviously is no. कोई मुझे कह सकता है, if you have an inductive network, ठीक है, this is an inductive network, करंट यहां पर फ्लो हो रही है I. Can we have a current like this? Let's assume at this current was flowing constant, फिर collapse हो गई zero. Is it possible? नो सर. Why? सर इनर्शिया होता है इंडक्टर में करंट के लिए. Exactly. जो आपकी इंडक्टेंस होती है, it has a current inertia. ये अपने करंट को instantaneously change नहीं होने देता है. Reason is, if there is an instantaneous change in this current, voltage across an inductor is L di by dt. If there is a step change in current, what is derivative of step? Anyone? Derivative of step. Zero Impulse. time में आपको change हो गया. It is? Impulse. It is impulse. Impulse का मतलब है this is infinitely high. Voltage across this is infinitely high. उसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक इतनी वोल्टेज होती है कि सराउंडिंग एयर आपका आयोनाइज हो जाएगा. If surrounding air gets ionized, you have a another path for the current to flow. So basically what will happen is, if this surrounding air is ionized, ये करंट आप रुकाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो इंडक्टर बेचारा कुछ भी हो जाए, रुकाने के बजाय आप करंट यहां से फ्लो होने लगेगी. Is that clear? So we have to study again this in some detail when we take up the study of circuit breakers. What I want to tell you is, there are many delays involved. Even after the relay has operated, there will be some time needed for this current to build up. There will be some time needed for this tripping signal to travel to the circuit breaker. The circuit breaker will not open instantaneously. In fact, there is a entire quantity. अगर आपने देखा होगा, जो असाइनमेंट मैंने रखी थी आपको, बोला था खुद पढ़ो. एक सेकेंड में, there is a message. Okay. उसमें मैंने आपको बोला था 2-3 टर्म्स हैं, you please make yourself familiar with that. This circuit breaker will also operate in some time. We call it circuit breaker opening time. And because of that, you can't keep the time of operation of this relay TA to be only, I mean, very close to TB, because
of all the delays involved in the system. Plus delay के साथ साथ, because nothing is predictable, we always have some unpredictability in operation. We also have to keep some kind of a margin. Is that clear? Margin का मतलब ये होता है कि जैसे आपको क्लास में घुसना है 11 o'clock, तो मैं 11:05 11 तक आपको आने देता हूँ, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल. 5 मिनट 4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ विच this interval is kept between TA and TB. This is known as coordination time interval. It is also known as selectivity time interval. These names are self-explanatory. This interval is required for selectivity. Selectivity का मतलब आपको पता है. And it is also required for coordination. Coordination between what? Between relay A and relay B. Coordination का मतलब है उनकी ऑपरेशन हार्मोनियस होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए, एज अपोज टू अपोज करना चाहिए. So again, what is the value of CTI? It is not a question which has a precise answer. But it is typically taken to be 0.5, 0.6 seconds or thereabout, say 0.5 seconds. So if I take CTI to be 0.5 seconds, time of operation of relay A will be कितना 0.1 plus 0.5 seconds. वो कितना हो गया 0.6 seconds. Is this clear? Is this clear or not? हाँ कि ना? Yes, sir. Any questions? No, sir. So I will repeat. Basically, what happens? You have to, when you have to design a DTOC protection scheme for this radial feeder, you start from the downstream relay. You first of all look at the, क्या नाम है इसका, जो आपका पिकअप वैल्यू होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं? पिकअप वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल करंट एंड इट शुड बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट फॉल्ट करंट दैट इज सीन. दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिले. एंड फिर मैंने आपको बोला नॉर्मल करंट से हम वही 15-20-25% ऊपर लेते हैं, because this relay is only responsible for its own line section. There is no other line section ahead of it. We typically take its time of operation to be the smallest possible value. Whatever be the smallest possible value, I have taken a notional value 0.1. It can be 0.2 anyway. After that, when you have to go on to the next relay, जो इसके upstream relay है, upstream का मतलब है something which is closer to the source here. The current or pickup value should again be greater than the normal value, and it should be smaller than the smallest fault current, which comes under the zone of protection or under the reach of this relay. In this particular case, it is responsible for backup protection of line section BC. The smallest fault current in line section BC is this fault current IFC. तो इसलिए जो हमारे पास इसमें bounds थे on pickup current, those ranged from normal current to this fault current as opposed to any other fault current. ठीक है, ये fault current है, ये fault current है. And then what about time of operation? Time of operation has to be somewhat greater than this relay. What does it depend on? It depends on the factors that I have enumerated. Typically, it is of the order of 0.5 seconds. ठीक है? Now, hopefully this is clear. Any questions? कोई question है अभी तक? No, sir. Anyone? क्या question है कोई? No, sir. हाँ. Now look here. This is the same system, खाली इसमें 2 के बजाय 3 line section है. Let's assume यहाँ से यहाँ तक हमने डिजाइन किया, R1 वहाँ RB था, बट एनीवे यहाँ R1 है, R2 हमने डिजाइन किया. How will I design R3? शाबाश, कोई मुझे कह सकता है? डिजाइन का मतलब है I have to choose a pickup value, I have to choose a time of operation. First of all, how would I choose that pickup value? क्या मुझे इसमें मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए? Anyone? नॉर्मल वैल्यू पहले पता होना चाहिए कितना है I3 प्लस नॉर्मल I2 वैल्यू यहाँ कितना होगा? यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है नॉर्मली? I1 प्लस I2 प्लस I3. L1, हाँ वही L1 प्लस L2 प्लस L3. आपको आया समझ क्यों? देखो यहाँ पर करंट नॉर्मली फ्लो हो रही है L1, यहाँ पर नॉर्मली करंट फ्लो हो रही है IL2 या जो भी L2, एंड IL2 प्लस IL1, एंड यहाँ पर ऑब्वियसली KCL के तहत दिस इज IL2 प्लस IL1 प्लस IL3. ओके, व्हाट अबाउट द फॉल्ट करंट फॉर विच इट इज रेस्पॉन्सिबल, द मिनिमम फॉल्ट करंट? किस वाले बस की है वो?
L2. बस नंबर 2 ये वाला है ना, because it is responsible for all the faults from this point to this point, and this point at this point bus number A for example, यहाँ इसका नाम मैंने रखा है, the fault here is obviously lowest because यहाँ पर तो exact value नहीं दिया हुआ है, but anyway we presume that it is lowest because it is farthest away from the source. What about time of operation? In fact, it's given on the diagram. Time of operation कैसे मैं set करूंगा इसका? More than R2, obviously. More than R2 obviously, but कितना more? It obviously is greater than time of operation of R2 plus CTI, selectivity time interval. तो यहाँ पर आप देखो, for any fault from A to B, time of operation is given by this point. यहाँ से लेकर यहाँ तक time of operation है 0.1 second. For any fault from C to A, time of operation is this. ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि बीच में CTI भी हमको है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉल्ट होता है रिले टू ऑपरेट होना चाहिए, रिले टू ऑपरेट होता है 0.1 प्लस CTI पे. एंड फॉर एनी फॉल्ट in line section DC, this is the time of operation. So what happens to the time of operation as I move towards the source? Will it increase or decrease? Increase. Is it a good thing or a bad thing? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात. Why? Because reliability कम हो रही है. मतलब how is reliability less here? Reliability का मतलब है ये ट्रिप नहीं हो रहा है, ट्रिप तो हो रहा है. हाँ, लेकिन इतने टाइम में मे बी द डैमेज वुड बी डन. हाँ मतलब no, logic is the greater the fault current, greater is the probability of damage to your power system. Is that clear? In other words, the higher should be the speed at which that fault is removed from your power system. Is that clear? But what is happening here? As one moves from the load end towards the source end, the fault current increases, but the time required to get rid of the fault increases. So obviously that's a bad thing. Is that clear? That is in fact one of the major disadvantages of using a definite time relay. हमने देखा इसमें simplicity है. We just have to worry about two things. One is that operating time at pickup time, pickup current, nothing else. बाकी कोई इसमें information हमें नहीं चाहिए. But because of these problems, it is इसमें ये प्रॉब्लम काफी होती है, मतलब ना ये जो इश्यूज मैंने आपको बोले कि अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलते हैं. सोर्स के नजदीक जाओगे, टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले ज्यादा है. नॉर्मली हम इंट्यूटिवली क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ज्यादा फॉल्ट है तो कम से कम, अगर ज्यादा नहीं लेकिन सेम टाइम पे तो ऑपरेट करो. बट we see things happening in reverse. What will happen if I added another line section here? For example, यहाँ से यहाँ तक line section होता, let's call it R4. उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना होता? Plus another CTI. तो वो यहाँ पर होता ना, if this is CTI. And if I had another line section, there would be another time of operation. So imagine this kind of protection scheme is maybe valid for any system which has maybe 3 or 4 line sections. But if you have greater number of line sections, it is more or less useless. Because ये आपका ट्रिप हो रहा है in 0.1 seconds, okay, 0.1 seconds is good. This one is tripping in 0.6 seconds, okay. This one is tripping in 1.1 seconds. This one would trip in 1.6. This one would trip in 2.1. Now, that is unacceptable. इतना ज्यादा टाइम ऑफ अगेन ट्रिप का मतलब है 2.1 सेकेंड में ये खाली इसका सर्किट ब्रेकर सॉरी रिले ट्रिप होगा. सर्किट ब्रेकर तो उसके बाद ही ट्रिप होगा ना, मे बी उसके 0.2 या 0.3 सेकेंड्स के बाद. मैंने आपको बोला क्यों डिलेज होते हैं सिस्टम के अंदर. सो यहाँ तक आते आते लगभग 2.5 सेकेंड में आपका करंट फॉल्ट करंट रिमूव हो रही है. इन दैट 2.5 seconds, because every second has 50 cycles, 2.5 seconds will have 125 cycles. This fault current can do tremendous damage in your system. Typically आप घर में अगर देखते हो, if there is a short, even momentarily if there is a short, your MCB trips. आपने घर में देखा होगा. But 2.5 seconds तो इतना टाइम है कि ह्यूमन बीइंग भी इसको मतलब महसूस कर सकता है. Hence, this DTOC protection is not used for systems with multiple line sections or multiple subcomponents. Is that clear? So let us move on. Another problem with DTOC system is that there is no coordination between fuse and DT relay. Let me explain this.
हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें हमारे पास दिस लाइन सेक्शन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्यूज एंड दिस लाइन सेक्शन इज प्रोटेक्टेड बाय ए रिले। अब आप बोलोगे ये सर ये क्यों है यहाँ प्रोटेक्टेड बाय अ फ्यूज एंड ये क्यों है प्रोटेक्टेड बाय रिले? ये हो सकता है कि ये मतलब आपने देखा होगा टिपिकली द ट्रांसफॉर्मर्स दैट वी हैव in our localities, they are protected by fuses. So maybe this is some kind of a locality, terminal locality or whatever. And I have not shown the transformer here because obviously it's doesn't contribute anything to the conceptual understanding of the system. But maybe this fuse is protecting that transformer. So look here, look at I'm this diagram 15.6 superimposes the characteristics of the fuse on the characteristics of the what's our go characteristics of the DT relay। ठीक है, ये आपके पास है DT relay का characteristic। Let me draw it in red pen। I'm so sorry। कहाँ गया मैं? ठीक है, कहाँ था ये? So let's assume basically in this particular example you have created a fault at this point. This point X corresponds to the point of intersection of the fuse characteristic and the जो आपके पास है DTOC characteristic. Now if there is a fault somewhere here at this point, the fault current is to the right of this, क्योंकि जितना आप सोर्स के नजदीक जाओगे फॉल्ट करंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो यहां पर आप देखो, ठीक है, दिस इज लेट्स कॉल इट पॉइंट x1। Again, why have I drawn it to the right of this point? Because it is closer to the source and hence the fault current is expected to be larger. Now at this point, the time of operation of the fuse is smaller compared to the time of operation of the DTOC relay, and hence as you can see for yourself, there is some kind of a selectivity time interval between these two characteristics, and hence as expected this fuse will trip or at least melt before this relay operates. Is that clear? On the other hand, if there is a fault somewhere here, x2, okay, so x2 is further away from the source and hence the fault current will be smaller. The fault current is somewhere here, let's call it x2. Now as you can see for yourself, the time of operation of the DT relay is smaller compared to the time of operation of क्या है इसका नाम, fuse. Hence for any fault between x and this क्या नाम है bus B, this DTOC relay will operate before this fuse. Is that clear? And that is typical. In fact यहाँ पर example दिया है fuse का। ये प्रॉब्लम हमारे पास क्यों हो रही है? द प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम वहां पर क्यों नहीं हो रही थी जब हमने वहां पर वो DT रिलेज अभी स्टडी नहीं किए, मल्टीपल हमको सीरीज में थे लगा के, because there the characteristics were identical. We had one pickup value, we had one time of operation. Here the fuse characteristics are not so simple. They are not characterized by simply one current and one time of operation. They have multiple currents and multiple times of operations. In fact, the time of operation is a very strong function of the value of current. Is that clear? So it was because of this historically that we developed what are known as inverse relays. अब बोलोगे सर ये क्यों डेवलप हो गया? क्योंकि रिमेंबर ये जो फ्यूजेस है ना, दे हैव बीन यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट 200 years. Initially maybe in the 1890s or early 1900s when the power systems were being expanded, the bulk of the protection was still provided by fuses. ठीक है? So in order to be compatible with those fuses, we saw that initially people developed these DTOC relays, but they soon realized that these DTOC relays, because their curves are very different from the curves of a relay, from the curves of a fuse, that we have to develop some other kind of a relay whose curves mimic the characteristic of a fuse. ठीक है, ये historical reason है और ये हमारे माथे चढ़ गया है। ठीक है, because of which we developed what are known as inverse relays.
ठीक है. Let us look at the most widely used inverse characteristic. इसको हम कहते हैं IDMT relay, inverse definite minimum time. Look at the characteristic of an inverse definite minimum time relay. ये आपके पास, forget about all these curves, ये multiple आपके पास ये क्या नाम है इसका characteristics हैं. But look at say this blue curve. This is the time of operation and this is the plug setting multiplier. Plug setting multiplier क्या होता है? It is current that flows on the CT secondary into the relay divided by the plug setting, जो हमने last class में देखा था. Initially the characteristic is highly inverse. ठीक है. As the current increases, the time of operation falls and falls quite rapidly. But after some time, beyond this point, ठीक है, the time of operation becomes more or less constant. ठीक है. In fact, अगर आप इस point के आगे देखोगे ना, time of operation is more or less independent of the current that flows into the network. In other words, beyond this point, the characteristics of this relay are identical to the definite time over current relay that we have seen. Hence the word inverse definite minimum time relay. ठीक है. Initially, this characteristic is inverse, and after that there is a definite minimum time. Definite time relay है क्योंकि constant है, minimum है क्योंकि इसके नीचे आपका time of operation नहीं जाता relay का. Is that clear? ठीक है. So we have actually we have multiple types of these equations. ये हमारे पास है. This is the most important one. In fact, typically it is called the IDMT relay, but we have other equations as well. This equation relates the time of operation of the relay to the time multiplier setting, and I by S होता है plug setting multiplier. So given the time multiplier setting and the plug setting multiplier, you can calculate the value of the time of operation of the relay. इस वाले कर्व को हम कहते हैं standard inverse. It is also simply called IDMT relay. In fact, Indian standards only recognize this characteristic. ये जो बाकी characteristics हैं, these are British characteristics, but anyway, let's look at them as well. This is a very inverse characteristic. This is a extremely inverse characteristic. Why this terminology? We shall see that in a moment. ठीक है. Then we have IEEE standard, but ये इंडिया में खास यूज नहीं होता है. We typically follow the IEC standards, or at least some portions of the IEC standards, because obviously of we were a British colony. ठीक है. अगर आप देखोगे IEEE standard equations जरा ज्यादा complicated हैं. अब आप बोलोगे सर ये मतलब ये क्यों equation है? For example, why do we have 0.14 here? Why not 0.15? Why do we have 0.02 here? Why not 0.022 or something? Answer है जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था. Initially, these curves or characteristics of a relay were defined in order to mimic the characteristics of a fuse. Now, when they performed these experiments, they found that this characteristic given by this equation, ठीक है, this is the most optimal characteristic in the sense के ये ऐसा characteristic है जो maximum number of fuses के साथ भी आपका compatible है. In addition to that, इसको so it's purely for historical reasons. अगर आप imagine करो कोई parallel दुनिया होती जिसमें fuse वगैरह इजाद नहीं हुआ होता, आज हम कुछ और ही पढ़ रहे होते. But because as I've said, anything that you have to invent must be backward compatible. So look at the sequence of things that have happened here. We started out with fuses, ठीक है, maybe in the late 19th, early 20th century. Then we moved on to relays, but the relays had to be compatible with the old fuse characteristics, because otherwise आपको सारे fuse वगैरह निकालने थे. ठीक है. कॉस्ट तो काफी अलग था ना, क्योंकि मतलब लिटरली हर एक मोटर को अपना फ्यूज होता है. So we developed these standard equations which were number one compatible with fuses, and number two they were easy to manufacture, जो हमारे relays थे ऐसे characteristic वाले. ठीक है. And now from the 1980s 1990s onwards, we are no longer are using these क्या नाम है इसका electromechanical relays. We are using numerical relays. न्यूमेरिकल रिले में तो आपकी जो मर्जी, जो आप इक्वेशन इंप्लीमेंट करो, इसमें क्या एक इक्वेशन ही तो लिखनी है. आपने मैटलैब में 10,000 बार लिखी होगी. यू डोंट हैव टू कंस्ट्रक्ट एनीथिंग. कोई कॉइल नहीं बनानी, कोई कोर नहीं बनाना.
ठीक है, all of these are fictitious virtual quantities. There is no actual thing which is moving in a numerical relay in a computer. But because our systems have to be backward compatible, तो इसलिए we are constrained to use some particular characteristics. We can't have an arbitrary behavior of our relay. Is that clear? Now कोई मुझे कह सकता है शाबाश, ओके ये है, कहाँ गया, how do we construct a characteristic like this? This is a IDMT relay, ठीक है, this is like this. या मैं थोड़ा ज्यादा बना लेता हूँ, ठीक है, it is inverse for a large region and then finally it remains constant. कैसे बनाएंगे ये कैरेक्टरिस्टिक? डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले हमने कैसे बनाया था? वी हैड यूज्ड वन प्रॉपर्टी. व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड? हेलो, एम आई ऑडिबल? फैजान? यस सर, यस सर। हाँ, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाएंगे? हमने डीटीओसी रिले का कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाया था? डीटीओसी रिले कैरेक्टरिस्टिक ऐसा था. व्हाट हैड बी यूज्ड हियर? मैंने आपको बोला था दीज रिलेज आर इजीली क्या? Saturation. हाँ, these relays DTOC relays have an easy saturation. In other words, इनका core वगैरह size हमने कम रखा था. So the moment current goes beyond the pickup value, the pickup current basically corresponds rather to जो आपके पास saturation current होती है. On the other hand, यहाँ पर जो हमारे पास system है, this is pickup current, and let's assume this is saturation current. As you can see, in this kind of a system, the saturation current is much larger compared to the pickup current. Is that clear? Is that clear or not? So initially, for currents which are close to the pickup value हमने देखा typically it is load current plus 20-30% overload. ठीक है? Time of operation is very 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 large. But as we increase the current, flux increases, time for operation falls. For very large values of current, the time for operation is more or less constant, because as soon as we cross the saturation current value, the iron saturates and therefore the flux remains constant, force remains constant, time for operation remains constant. Is that clear? ये आपके पास है IDMT characteristic. Now, by controlling the ratio of saturation current to pickup current, we can basically modify this characteristic. So for example, we have something like this. ये था हमारे पास DTOC system. इसमें क्या रिश्ता है between pickup current and saturation current? Hello? What was the relationship between pickup current and saturation current in a DTOC relay? Hello? Anyone? Pickup current और saturation current में क्या रिश्ता है in a definite time relay? यहाँ देखो ना, इसमें क्या इतना मुश्किल? They are? सेम है सर। हाँ, same है ना, obviously. The moment you pick up, that is the time you saturate, because beyond that current, it doesn't matter. The time of operation is constant. Then you can have a characteristic like this. This is say IDMT relay. Okay, this is time something like this. Okay, this is IDMT relay. This point here is its saturation current. Okay. As you can see, saturation current is substantially greater compared to the pickup current. Then we can have another characteristic. Okay. This is inverse, very inverse relay. इसमें अगर आप देखोगे, saturation current is even farther away from the pickup current.
इन अदर वर्ड्स, जितना आप ये सैचुरेशन करंट इंक्रीज करोगे कंपेयर टू द पिकअप वैल्यू, उतना आपका इनवर्स रीजन इंक्रीज हो जाएगा. उसका विड्थ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज द इनवर्स रीजन इन विच as current increases time for operation falls and hence the degree of inverseness increases. So ये जो क्या नाम है इसका, ये जो नाम है ना यहाँ पर पड़े हुए, कहाँ गया, ये वाले, this is very inverse characteristic. In this case, if you, I mean, play along with these equations, you will you can easily plot these in MATLAB or whatever. um, as we increase this one, it has a delayed saturation compared to this, and extremely inverse has even more delayed saturation compared to this. Is that clear? ठीक है. So basically in the olden days, if we wanted different kinds of relays, we basically played around with the core size. Generally speaking, if I wanted to increase the range of inverseness, I used a relay with a larger core. In the same manner, if I wanted a relay with a small zone of inverseness, I used a smaller core. Which one is more expensive, larger core या smaller core? लार्जर कोर. उसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू कर्व है यहाँ पर इसका कॉस्ट सबसे हाई होगा, एंड जो ब्लैक कर्व है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिले का कॉस्ट कम होगा. नाउ दैट इज नो लॉन्गर अ फैक्टर नाउअडेज. जैसे मैंने आपको कहा, द सेम रिले नाउअडेज कैन जनरेट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें क्या बड़ी बात है, इक्वेशन ये तो इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है. एंड दैट इम्प्लीमेंटेशन इज नाउ डन इन सॉफ्टवेयर. वो गया जमाना अभी आयरन कोर एंड वगैरह का. एनीवे, लेट अस नाउ लुक एट फीडर प्रोटेक्शन यूजिंग IDMT relay. Any questions thus far? कोई question? Hello? No sir. ठीक है. So please concentrate here because IDMT relays are really important. Just give me 1 minute. I have to check one thing. एक second. So, okay, I have 10 minutes. एक second. Okay, इसके बाद protection of three-phase feeder, and then we have directional protection. और क्या करना है, और current relay. एक second. Sections, interaction. Okay, I'm so sorry. I basically have to. I have a meeting at 12:35. So if I start this topic right now, I will have to basically restart it in the next class. So I think we will end here. But we have still 5 minutes. So if you have any questions, please ask. कोई सवाल अगर आपके पास है, any question of any topic अभी तक जो हमने पढ़ा है, because आपके माइनर आने वाले हैं. So
इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अभी तक जो हमने पढ़ा काफी डिटेल में पढ़ा हमने, मतलब सीटी पीटी पता नहीं क्या क्या, ओवर करंट रिले, टाइप्स ऑफ रिलेज एंड ऑल दैट। एनी क्वेश्चंस? हेलो? So we'll take a day to get over it again again. अगर कुछ रहेगा we'll let you know. ओके, सो एनीवे यू आर फ्री टू, आप ये जो मतलब गूगल क्लासरूम है इसकी आप फीड पे आप फीड कर सकते हो, सॉरी पोस्ट कर सकते हो, और यू कैन ईमेल मी एनी टाइम यू लाइक। so okay then, so inshallah we'll meet tomorrow at is it 12? Yes. Wait a second, let me check. एक सेकेंड, आई हैव टू, बेसिकली आई वांट अनदर क्लास ऑफ योर्स, क्योंकि हमको अनफॉर्चुनेटली 2 बार हो गया इंटरप्ट ना, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड ऑल दैट। सो कैन आई हैव एन एडिशनल क्लास ऑफ योर्स टुमारो और समथिंग? कल ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्लास ले रही है मैम, सबा मैम। कितने बजे? इखलाक सर भी, इखलाक हाँ सर, हमारी कल 10 से 11 एक्स्ट्रा क्लास है ना, एक स्लॉट, वो भी इखलाक सर भी बोल रहे थे मैं लूंगा, सबा मैम भी बोल रही थी मैं लूंगी। अभी पता नहीं है ओके दोनों में से कौन लेगा। ओके 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 जी सर। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आज आज मैं ले सकता हूँ आपकी एक्स्ट्रा क्लास से आफ्टर प्रेयर्स, और इज इट टू मच फॉर यू? हेलो? हेलो। हाँ, कैन आई टेक एन क्लास आफ्टर प्रेयर्स? आई एम नॉट श्योर, प्रोजेक्ट के लिए मत किसी को जाना होगा कॉलेज, बिकॉज 2 से 4 तक प्रोजेक्ट के लिए इनका टाइम है ना। Okay, then inshallah we'll meet tomorrow at 12 to 1. Maybe I can extend that class to 1:30। कल आप 1:30 बजे खाना खाना, कोई बात नहीं। तो फिर कल मैं इंशाल्लाह 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, बिकॉज देर आर सम न्यूमेरिकल्स दैट आई हैव टू सॉल्व व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल रियली गेट कंफ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। एंड I have to also talk about three phase protection, and let me look at it. Directional over current protection है, so up to that will be in the syllabus of your minor, so that differential protection onwards आपके second minor में आएगा। differential protection है, transfer protection है। okay okay then, thank you so much। ये you can leave, खाली जो मेरे project group है ना, ये मोहसिन वगैरह, आप जरा 2 मिनट यहीं रहो, the rest can leave। हाँ ये शाहरुख, यस सर। हाँ ये वो कहाँ है, क्या नाम है भाई का आपका? सर वो अभी इस टाइम यहाँ पे नहीं है। हाँ नहीं, अभी वैसे भी एक्चुअली आई हैव अ मीटिंग एट 12:40, सो कैन वी हैव वही ना प्रोजेक्ट मीटिंग एट 2 o'clock आफ्टर प्रेयर्स इंशाल्लाह? ओके सर। ठीक है, तो आप मुझे लेकिन याद दिलाना, कल मैंने आपको बोला था शाम को, फिर मुझे खुद याद आ गया 12 बजे, मुझे ख्याल ही नहीं रहा एक्चुअली जब मैं घर आया था। तो आप मुझे ना टेक्स्ट या समथिंग कर लेना 2 o'clock, ठीक है? ओके। ओके ओके, थैंक यू सो मच।